तुष्टुभो प्रणति नम्र शिरोधरां स वाग्वी प्रहर्षपुलक। ओम दिव्यै नमो नमः। शुभं भवत् कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां सायदीपकाय नमो नमः। ओम गणाधिपतये नमो नमः। ओम दिव्यै नमो नमः। दिव्यै प्रसीद परमा भवति भवाय अद्यो विना सयदि को भवति कुलानि। यं तुष्टुभो प्रणति नम्र शिरोधरं सः वाग्वी प्रहर्ष पुलकोदगमछ। ओम जगदम्बिकायै नमो नमः। हे जगद ओम नमो नमः। हरि ओम। खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघं चूलं भुसुण्डिं शिर शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतं नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकं शिवे महाकालिकं यामत्सौचविदेहलो कमलजोहन्तं मधुं कैटभम् अक्षयशक्परशुं गदेषु कुलिशुं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं कण्ठां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने दयतिमस्ते प्रसन्नाननं सेवे शैरीविमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जयनन्तं घण्टविलसन् चितां सुतुल्यप्रभां गौरीदेवसमं त्रिजगता माधारभूतां महापूर्वमन्त्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम जगदम्बिकाय नमः। गणाधिपतये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सरस्वतीभ्ये नमो नमः। भवानी अष्टकं न तातु न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न हर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। भवाब्दा बबारे महादुःखभीरूपपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशितेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। हरि ओम दिव्यै नमो नमः। अब आज 2082 साल आषाढ महिनाको 24 गते मङ्गलबारको दिन हामी श्रीमद्देवी भागवतको तृतीय स्कन्धका कथाको पाठ पारायणमा छौँ र हिजो हामीले 25औं अध्यायसम्मको पाठ पारायण गरेका थियौँ। आज हामी 26औँबाट सुरु गर्छौँ। अथ षड्विंशोऽध्याय जन्मेजयोवाच नवरात्रि सम्प्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तम विधानं विधिवत् ब्रूहि शरत्काले विशेषतः किं फलं खलु कस्तत्र विधिकार्य महामते एतद्विस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विजोत्तम। व्यासोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि नवरात्रव्रतं शुभं शरत्काले विशेषेण कर्तव्यं विधिपूर्वकं
वसन्ते च प्रकर्तव्यं तथैव प्रेमपूर्वकं तावत् तुल्यं दशनाख्यं नूनं सर्वजनेषु वै शरन् वसन्तं न मानव दुर्गमो प्राणिनाम् इह तस्माद्यत्नादिमं कार्यं सर्वत्र सदा स्वाभिवसु महाघोरा वृत्तु द्रोगकरुणिणं वसन्त शरदावेव सर्वनाशकराभूः तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यं चण्डिका पूजनं बुधै यत्र शुभे मासे भक्तिवरं नरादिव अमावास्यं च सम्प्राप्य संहारं कल्पयेत् शुभं भविष्यं सञ्चासनं कार्यं मेकभुक्तं दुदद्विने मण्डपस्तु प्रकर्तव्य समेधे शिशुभिस्थले हस्तषोडशमात्रेण मानेन स्तम्भध्वज समन्वित गौरवमेद्गोमयान्भ्यञ्च लेपनं कारयेत् तदा तन्मध्ये वेदिका शुभ कर्तव्या च समासेर चतुर्हस्तात् हस्तोच्च पीठात् स्थानमुत्तमं तोरणानि विचित्राणि वितानं च प्रकल्पयेत् रात्रौ द्विजानं नाथा मन्त्र देवी तत्त्वविशारदान् आचार निरतान् वेदाङ्गपारकान् प्रतिपद्यं कार्यं पात्रस्नानं विधानत नद्या तडागे वा भाव्यं कृपे गृहाद्धवा प्रातःनित्यं पुरकृत्वा द्विजानं वर्णं तत् अर्घ्यपाद्यादिकं सर्वं कर्तव्यं मधुपूर्वकं वस्त्रालङ्करणादीनि देयानि च स्वशक्तितभीतशासनं कर्तव्यं विभविष्यधिकर्ये चेत् विपरीतसन्तुषिते कार्यं सम्पूर्णं सर्वदा भवेत् नवपञ्चहस्ताय चैको वेद्या दिव्या पाठे द्विजस्मिता वरयेत् ब्राह्मणं शान्तं वारयेण कृते तदा स्वस्ति वाचनकं कार्यं वेदमन्त्रविधानत विद्यां सिंहासनं स्थाप्यं क्षोभं वस्त्रसमन्वितं तत्र स्थाप्यं विका देवी चतुर्हस्तायुधान्विता रत्नभूषण संयुक्ता मुक्ताहार विराजिता दिव्यांबरधरा सौम्य सर्वलक्षण समेता शंखचक्र गदा पद्मधरा सिंह सदा शिव अष्टादश भुजा भावी प्रतिष्ठाप्य सनातने अर्चाभावी तथा यन्त्रं निर्माण मध्य समितं स्थाप यत्पीठ पूजार्थं कलशं तत्र पादत पञ्चपल्लव संयुक्तं वेदमन्त्रेषु सहितं तीर्थजल सम्पूर्णं हेमरत्ने समन्वितं पार्श्वे पूजात सम्भारा तन् परिकल्प्य समन्तत गीतवादित निर्घोषान् कारयन् स मङ्गलाय वै हितवस्त्रान्नितायं च नन्दानं जनम्बरं प्रथमे दिवसे राजन् विधिपत्कामदं नृणं नियमं प्रथमं कृत्वा पश्चाद्भुजं समाचरेत् उपवासेन नक्तेन चैत्रभुक्तेन च वा पुनः करिष्यामि व्रतं नवरात्रमुतं मनुत्तमं साहाय्यं कुरु मे देवी जगन्नमं अखिलं यथाशक्ति प्रकर्तव्यो नियमो व्रतहेतवे पश्चाद्भुजं प्रकर्तव्या विधिमन्त्रपूर्वकं वन्दना गुरुकर्पूरे कुसुमैश्च सुगन्धिभिः मन्दार करजा शुक चम्पकै करवीरकै मालती ब्रह्मका पुष्पै तथा बिल्वदलै शुभे पूये जगदं धातिं ध्रुवै दिव्यै दिदानत फले नानाविधैरर्घ्यं पदार्थव्यं च तत्र वै नारिकेलैर्मातृङ्गै दाडिमी कदलीफलै नारङ्गैपनशैश्चैव तथा पूर्णफलै शुभे अन्नदानं प्रकर्तव्यं भक्तिपूर्वं नराधिपं मन्दसनं ये कुर्वन्ति ते कार्यं पशुहिंसनं महिषाजवाहरणं बलिदानं विशिष्यते दिव्यगिरिं निहतायन्ति पशवः स्वर्गमङ्गव्यं नहिंसा पशुजा तत्र निघ्नतं तत्कृते नग अहिंसायागिकी प्रोक्ता सर्वशास्त्रविनिर्णये देवताते विशिष्टानं पशूनां स्वर्गतिर्ध्रुवा होमार्थं चैव कर्तव्यं कुण्डं चैव त्रिकोणं तद्दिलं वा प्रकर्तव्यं त्रिकोणं मानत शुभं त्रिकालं पूजनं नित्यं नानातवेर्मनोहरे गीतपादीन्द्रनेत्रैश्च कर्तव्यश्च महोत्सव नित्यं भूमौ च शयनं कुमारिणां च पूजनं वस्त्रालङ्करणैर्दिव्यैर्भोजनैश्च सुधामदे एकेकां पूजयन् नित्यं निर्विद्या तथा पुनः द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं च वा विभवस्यानुसारेण कर्तव्यं पूजनं किल वित्तशास्त्रं न कर्तव्यं राजशक्तिस्मगे सदा एकवर्षा न कर्तव्या कन्यापूजा विधोनिप परमज्ञात भोगानं गन्धादीनं च बालिका कुमारिका दुषा प्रोक्ता द्विवर्षा भवेद्यः तिमध्ये च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्दिका रोहिणी पञ्चवर्षा च षड्वर्गा कालिका स्मिता चण्डिका सप्तवर्षा शान्तष्टवर्षा च सम्भवी नववर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा दशवार्षिकी अथ ऊर्ध्वं वर्तव्या सर्वकार्ये विगार्गिता एवं सन्नाम पूजा कर्तव्या वीर संयुक्ता तासां फलानि भक्षामि नवनं पूजने सदा कुमारी पूजिता कुर्यात् दुःखदारिद्र्यनाशनं शत्रुक्षयं धनायुष्यं फलवृद्धिं करोतु वै त्रिमूर्ति पूजनादायो स्त्रीवर्गस्य फलं लभ्येत् धनधान्यगमश्चैव पुत्रपौत्रविद्यया विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यस्य पार्थिव सुखार्थी पूजयेत् नित्यं कल्याणं सर्वकामदात् कालिकां शत्रूणां नाशार्थं पूजयेत् भक्तिपूर्वकम् ऐश्वर्यधनकामश्च चण्डिकां परिपूजयेत् पूजयेत् सामग्री नित्यं नृपसंभवनाय च दारिद्र्यनाशाय संग्रामे विजयाय च क्रूर शत्रुविनाशार्थं ततोग्र कर्मसाधने दुर्गां च पूजयेत् भद्र परलोकसुखाय च बाधितार्थसिद्ध्यर्थ सुभद्रां पूजयेत् सदा रोहिणीं रोगनाशाय पूजयेत् विधिनं बन्धर श्रीरविस्तते नमन्त्रेण
पूजयेत् भक्ति तत्पर श्रीयुक्त मन्त्रे अथवा बीज मन्त्रे तथा विवाह कुमारस्य तत्त्वानि नयनया सृजन्त्यपि श्रीलयाख्यादीनपि च देवास्तां कुमारीं पूजयाम्यहम् सत्त्वादि स्त्रीमूर्तियां तये नानास्वरूपिणी त्रिकालव्यापिनी शक्तिस्त्रीमूर्तिं पूजयाम्यहम् कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजिता निशं पूजयामि सतां भक्त्या कल्याणि सर्वकामदां रोयन्ति च बीजानि प्राग्जमन् जन्म सञ्चितानि वै या देवी सर्वभूतां रोहिणीं पूजयाम्यहम् काली कालयते सर्वं ब्रह्माण्डं सचराचरं कल्पान्तसमये यातं कालिकां पूजयामहं चण्डिकां चण्डरूपां च दण्डमुण्डविनाशिनीं तां चण्डपापहरिणीं चण्डिकां पूजयाम्यहम् अकारादसमुत्पत्तिर्यन्मने परिकीर्तिता सदां सुखदां देवीं समयं पूजयाम्यहं दुर्गान्त्रयति भक्तमुल्य सदा दुर्गातिनाशिनी दुर्गे सर्वदेवानां तां दुर्गां पूजयाम्यहम् शिवदाणी च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अभद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम् एभिर्मन्त्रे पूजनीया कन्यका सर्वदा बुधैः पश्चालङ्कारणैर्मन्दैरुच्चवचैरपि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति को भवति कुलानि तां तुष्टुभो प्रणति नम्र शिरो धरां सा भाग्वी प्रहर्षबुलको गमचारुदेह दिव्यायया ददमिजं जगदं सम्भूत बिम्बानुकारिकन को नमः शान्तिकान्तं दिव्यै नमो नमः देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति को भवति कुलानि तां तुष्टुभुः प्रणति नम्र शिरोधरां सह वाग्भि प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेह यशि स्वयं सुकृतनं भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मजां कृतधियां हृदये सुबुद्धि शतं जनः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवी स्पर्शीद परमा भवाय विनाशयति को पति कुलानि श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टदशसंहितायां स्कन्दे कुमारी पूजन पूजापणं नाम षड्विंशोऽध्याय अथ सप्तविंशोऽध्याय व्यासोवाच हिनाङ्गी वर्जयत् कन्यां कुष्ठयुक्तं प्रबणाङ्कितं कन्तस्फुरितं हिनाङ्गीं विशालकुलसमभं जात्यन्धं केकरं काणीं कुरूपम्बौ रुमसं सत्येन्द्रोजे योगिनं कन्यां रक्तपुष्पादीनां खिदं क्षमं गर्भसमुद्भूतं गोकुलं कन्यकोद्भवं वर्जनीय सदा चैतस्वरपूजादिकर्मसु अरोगिणीं स्वरूपाङ्गीं सुन्दरीं व्रणवर्जितं एकवंशमुद्भूतं कन्यां सम्यक् पूजयत् ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे निर्वंशजा लाभार्थे वैश्यवंशोस्था मता वा शूद्रवंशजा लाभार्थी वैश्यवंशो तत् वा शूद्रवंशजा ब्राह्मणे ब्रह्म पूज्य राजने ब्रह्म वंशजा वैत्रिवर्गजा पूज्यात् चतस्रवादसम्भवै कारुभिश्चैव सम्बन्ध तथा यथा युगं प्रपूजयेत् नवरात्रविधानेन भक्तिपूर्वं सदैव हि अशक्तो नियतं पूजां कर्तुं चेन्न वरात्रके अष्टमं च विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा बपुराष्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह अन्तोष्टम्यां विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा नानाविधोपहारैः गन्धमाल्यानि लेपनैः पायसैर्मिषैर्होमैर्ब्राह्मणानां च भोजनैः फलपुष्पोपहारैः दोषे जगदम्बिकां भुवासे सक्तानं नवरात्रपते पुनः उपोषणत्रयं प्रोक्तं यथोक्तफलदं निभ सप्तमं ततः अष्टमं नवमं भक्तिभावतः त्रिरात्रकरणात् सर्वं फलं भवति पूजनात् पूजा दिविश्चैव होमैश्च कुमारी पूजनं सदा
सम्पूर्ण तद्व्रतं प्रोक्तं विप्रणं च यो भोजनयेत् व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्रव्रतास्यास नैव तुल्यानि भूतले धनधान्यप्रदं नित्यं सुखसन्तानविदम् आरुरायोग्यदं चैव स्वर्गदं मोक्षदं तदा विद्यार्थी वदनार्थी व पुदार्थी वफन् नरद्विनेदं विधिवत् कार्यं व्रतं सौभाग्यदं शिवम् विद्यार्थी विद्यां वै प्राप्नोति साधनात् राज्यवस्तु निपसाद्यं समवाप्नोति सर्वदा पूर्वजन्मनि नौर्याय न कृतं व्रतसमतमम् दिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्रवर्जित वन्द्या च या भावी नारी विधवा धनवर्जित हनुमाता तथार्तव्य एनं कृतवती व्रतं नवरात्रव्रतं प्रोक्तं न कृतं येन भूतले न सकथं विवाहं प्राप्य मोदते तथापि देवी प्रकृतिन सम्मिश्रे कोमले बिल्लपत्रके भवानी पूजिता येन स भवेन्द्रपतिसिद्धौ नाराधिता येन शिवा सनातनी दुःखार्थिता सिद्धिकरी जगद्वरा दुःखाभित शत्रुहितस्य भूतले नूनं दरिद्रो भवति यमानव विष्णुरिन्द्रो हरिपद्मजौ तथा वन्ये कुबेरो वरुणो दिवाकर जयन्ति सर्वार्थसमाप्ति नन्दिता किं मनुष्या न भजन्ति चण्डिकां स्वाहास्य स्वाहानम मनुप्रभावै स्थिप्यन्ति देवा पितरस्तदैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदाहरन्ति अन्यामयुग्मं सुदेवे मुनीन्द्र यचित्सय सृजति विश्वमिदं प्रदेशो नानावतारकलनं कुरुते हरिश्च नं करोति जगत् किल भस्मशम्भुस्तं सर्वदं न भजते नु कथं मनुष्य नैकति सर्वभुवने श्रीयथा विहीनो देवो नरोऽथ व्यग किल गन्नगोभा गन्धर्व राक्षस पिशाचनगेषु न्यूनं यस्पन्दितं भवति शक्तियुतो यथेच्छं तं न सेवतकं सर्वकामार्थदं शिवं वदतस्यं न कुर्यान्नन्दं महापादक संयुक्तो नवरात्रव्रतं चरिदुच्यते सर्वपापेभ्यो नतकार्यं विचारणा पुरा कस्मिन् दिनो धनधीन सुगुदित कुटुम्बीचा भवत् कश्चित् कुशले निवसतम अपद्यानि बहुन्यास्याद्भवत्सु पीडितानि च भक्तिं किञ्चित् साहाय्ये प्रभुतस्य च बालक भक्ते स्मकार्यसङ्कर्तासौ परस्यात् बुभूषित कुटुम्बभरणं तत्र चकाराति निराकुल सदा धर्मरत शान्त सदाचार सत्यवान् अक्रुधनश्च निर्मदस्थान संयोषक सूयक सम्पूज्य देवता नित्यं प्रीतिनव्यतिथिं सदा भुञ्जान्ति पोषे वर्गे त कृतवान् भोजनं वणे एवं क्वचित् काले वै सुशीलो नामतो गुणै दरिद्रान् द्विजं शान्तं प्रपच्छन्ति विभूषित सुशीला उवाच बहुदेव कृपां कृत्वा वदस्व महामते कथं दारिद्र्यनाशं यदिति मे निश्चयेन वै धन्ये शणामे देवास्ति धनिषामिति मानद कुटुम्बभरणार्थं वै पृच्छामि त्वं द्विजोत्तम पुत्री सुतस्तमे बालो भक्षाति रोदते वृषं तावन्मात्रं गेहनन्नं मुष्टिमेकं ददाम्यहं विशेषतो यतो गेयात् गतपालो दन्मया अथो दयते तर्थं किं करोमि धनं विना विभोस्ति शुद्धयामे नास्ति वित्तं करोति किं दशवर्षाधिका यस्तु दानकालो वियत्फलम् तेन शोचामि विपिन्द सर्वज्ञोषि दयानिधे तपोदानं व्रतं किञ्चित् ब्रूहि जन्मं मन्त्रं तथा येनाहं पोष्यवर्गस्य करोमि द्विजशोषणं तावन्वेयास्यद्धनप्राप्तिर्नादिकं प्रार्थये किल तत्पश्चात् कुटुम्बं मे सुखितं प्रवेदिह तत्पुरुषो महाभाग ज्ञानेन परिचिन्त्यत व्यास उवाच इति पृष्ठ तथा तेन ब्राह्मण संसितव्रत उवाच परमप्रीतस्थं वैशं निपततम वैशवर्यं गुरु साध्य सवरात्रपदं शुभं पूजनं भगवत्या च भवनं भोजनं तथा वेदपारायणं शक्ति जप होमादिकं तथा गुरुसाध्य यथा शक्ति तव कार्यं भविष्यति यस्मात् परं किञ्चित् व्रतं नास्ति नवरात्रिविधं वैश्य पावनं सुगतं तथा ज्ञानदं मोक्षदं चैव सुखसन्तानवर्धनं शत्रुनाशकरं कामं नवरात्रव्रतं सदा राज्यवस्तेन रामेण सीता विरहितेन च किष्किन्धायां व्रतं च एतत् कृत्यं दुःखातुरेण वै व्रतं तेन विरामेण सीता विरहबन्धनेन विधिवत् पूजिता देवी नवरात्रव्रतेन वै तेन प्राप्तद्रव्यै देहि कृत्वा सेतुमहार्णवे हत्वा मन्दोदरीनाथं कुम्भकर्णं महाबलं मेघनादं सुतं हत्वा कृत्वा भूपं विशेषणं विवशं पश्चादयोध्यामागत्य भ्रान्तं राज्यमकण्टकम् नवरात्रव्रतस्य प्रभावेण श्रीशम्बर सुखं भूमितले प्राप्तं रामेण विदेशा व्यासवाच इति विप्रवच श्रुता सबै सुजं यद्वा जग्राह सम्मतं माया बीजादिभेदं ज्ञेप तदव परया भक्त्या नवरात्रमतं धृतं नानाविधिं भारैः पूजयामास सादरं नवसंवत्सरं चैव माया बीजपरायण नवमी वत्सरान्ते तु महाश्रमं महेश्वरी अर्धरात्रि तु सञ्जाते प्रतिशं दर्शनं ददौ नानावरप्रदानैश्च कृत्यं चकारतं
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद्देवी भगवती महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितायां तृतीयस्कन्धे देवी पूजा महत्त्ववर्णनं नाम सप्तविंशोऽध्याय अथाष्टविंशोऽध्याय। श्रीरामचरितवर्णनं श्रीजन्मेजयवाच कथं रामेण तच्चिन्नं व्रतं दिव्यसुखव्रतं राज्यपश्च कथं सूत कथं सीतारिता पुनः व्यासुवाच। राजा दशरथ श्रीमानयोध्याधिपतिस्फुर श्रीवंशधरश्चासीन् देवब्राह्मणपूजक चत्वारोजगिरि तस्य पुत्रा लोकेषु द्विसुता राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतस्य नामत राज्ञ विप्रियकरा सर्वे सदृशा गुणरूपत कौशल्य राम कैकेयी भरतस्मित सुमित्र तनयं जातो जमलोदय मनोहरौ तेजता वै किशोराश्च धनुर्बाणधर अखिल सुनभ कृत संस्कार भूपति सुखवर्धका कौशिकेन तथा गत्या प्रार्थितो रघुनन्दन राघवं मख्यरक्षार्थं सुनुं षोडश वार्षिकं तस्मै स्वयं ददौ रामं कौशिकाय संरक्षणं तो समेत मुनिं मार्गे जग्म तो सर्वदर्शनौ ताटका विनेता मार्गे राक्षसी वरदर्शना रामेणैक्येन बाणेन मुनिनां दुःखदा सदा योग्य रक्षा कृता तत्र शुभः नेदशड मारीचतस्कृत प्रायो निक्षिप्तो बाणवेगत गर्म यज्ञस्य परिरक्षणं गतास्ते मिथिलं सर्वे रामलक्ष्मणकौशिका आवल्या शापस निष्पापा सङ्किताबला विदेहनगरे तौ तु जग्मतुर्मुनिनाशः भञ्जस्य पाञ्च जनकेन पणीकृतम् उपमेयमे ततचितं जनकिञ्चरमं निषदं लक्ष्मणाय ददौ राजा पुत्रीमेकं ददुर्मिलम् कुशध्वज सुते कन्ये प्राप्तुर्माधवराबुभौ तथा भरतशत्रुघ्नौ सुशीलौ शुभलक्षणौ एवं दारी क्रिया तेषां भातॄणां च भवन् नृप तदूणां विधिलायां तु यथा विधिविधानत्व राज्ययुगं सुतं दृष्ट्वा राजा दशरथ राघवाय धुरं दातुं मनश्चक्रे निजाय वै संवारं विहीनं दृष्ट्वा कैकेयी पुरकल्पितौ वरौ सम्प्रदयामास भक्तारं वशवर्तिनं राज्यं सुताय जैके भरताय महात्मने रामाय वनवासं च चतुर्दशमासदा रामस्तु वचनस्तस्य सीता लक्ष्मण समेत जगामदण्डकारणं राक्षसैरुपसेवितं राजा दशरथ पुत्र वीरहेण प्रपीडित च उपानन्मेयात्मा पूर्वशापमनुस्मरन् भरत पितरं दृष्ट्वा मृत्युं मातृकिदैन वै राजमितं न जग्राह भ्रातृप्रिय चिकित्सया पञ्चवट्यं ससंरामो रामबाणपरजम्बनी सुपर्णकम्पिरूपं वै सकरस्ते स्मरात्मं दुरां खरादयसुतं दृष्ट्वा छिन्ननाशं चक्रसङ्ग्रामं मतुलं रामेणामितसा सजगान खरा निश्चतनैतानदे बलान्वितं मुनिनं हितमञ्चिन्नं रामसत्यपराक्रम गत्वा सुपर्णका लङ्कं खरदूषणघातं तुषिता कथयामास रावणे च राघवात् सुविसुतविनाशं तिं जातकृतवत खल जगामरतमारुह्य मारीचस्यां श्रमं ददा कृत्वा हिममृगं नेनुं नेतुं प्रेषयामास रावण सीता प्रलोभनार्थाय मायाविनय असम्भवं सोत हिममृगो सीता जिजीपथं गत मायावी चित्राङ्गस् धर्म प्रबलमन्ति कीर्तं दृष्ट्वा जानकी प्रागमं दैवनोदिता धर्मानय सङ्गान्त्यति स्वाधीन बद्धिताका तथा अभिर्तायार्थरामपि तत्संशय लक्षणं सचरं सनुराधाय व्ययो मृगं वदानुग सारगोपि हरिं दृष्ट्वा माया कोटिविशारद दृश्य बभून्वाथ जगाम च वनान्तरं मत्र गतं राम क्रोधाकृष्टधनु पुनः जगान चरिक्षण शरेण कृतिमं मृगम् स हतु तिबला तेन कृतक्रोशविषदुःखित लक्ष्मण हतु स्मृति मायावीन सुरखल शब्दस्तुमूल स्थापन जनज्ञ तस्तदा वेश्यति मत्वा दीनादेवरमवृद्धे गच्छ लक्ष्मण गुरुतं थं हतु सौरनन्दन तमहेचि सौमित्रे सायं कुरु सत्वरं तत्र लक्ष्मण सीता मम राम वदादपि नाहं गच्छति स्मुक्त तम सहायामि सम्यः समे आज्ञामीरागपश्चात्र तिष्ठति जनकात्मजे तदतिर्कमभितोऽहं तदेजामितवन्तिकं दूरं वैरागं दृष्ट्वा वने मायाविना किल तत्त्वं नाधिगच्छामि वदमेकं सुजमिते पुरीधैर्यं न मन्येद्य रामं हन्तुं क्षमप्स्यतु नाम त्यक्त्वा गमिष्यामि विलङ्घ्य रामायचदं व्यासवाच रुदति सुदति प्राहतं तदा विधिनोदिता अग्रवचनं कुरुं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अहं जानामि सौमित्रे सानुरागं च मम प्रति प्रेतं भरते नैव मदर्थमे सङ्गतं तां तथा पिता नारी स्वैरिणी कुमहादमा इति रामं प्रति तं न कर्तुमिच्छामि कामत नागयामि रामो जीवितं सन्त्यजाम्यहं विना न जीवामि विदुरा दुःखिता वृषं गच्छवा तिष्ठ सौमित्रे न जानेऽहं तवेषुतं क्व गतं ते दृश्यहातुं ज्येष्ठे धर्मरते किल तच्छ्रुत्वा तस्य लक्ष्मणो दीनमानसः प्रवाच रुद्रकण्ठस्तु तं तदा जनकात्मजं किमर्थचिते जैवाक्यं
मयि क्रूरतं किल किं वदस्यन्त्वनिष्टं ते अभिजाने धियायं विरास्तं दग्धरुद्रविषम् अग्रसयोपश्यन् जोगार्थं पृथिवीपते कथितः लक्ष्मणे तत्र रावण कपटाकृति भिक्षुवेशं तथा कृत्वा प्रविवेशं राष्ट्रमे जानकीतं यतिं मत्वा ददातं वन्यमादरात् भक्ष्यं सर्पवयामास रावणाय दुरात्मने तां प्रपञ्च सदुष्टात्मा नम्रपूर्वं दुष्करं काशी पद्म फलासाक्षी भने छैकाकिनी प्रिय पिता कस्य त बामुरु भ्राता प्रतिस्तव मुडी वैकाकिनी छात्र सीतासी वरवर्णिनी निर्जने विपिने किं सौधार्हाब्दमसि प्रिये उत जे मुनिपत्नी देवकन्या समप्रभा व्यास उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिवाच विदेहजा दिव्यं दृष्ट्या यतिं ज्ञात्वा मन्दोदया पतिं तदा राजा दशरथ श्रीमान् चत्वारस्तजवैषुता ज्येष्ठपतिर्मिति रामनामिति विश्रुत विभाषित कैकेय्या कीर्ति भूपन्दिना परे चतुर्दश समा रामो वसते तत्र लक्ष्मण जनकस्य सुता चाहं सीता नाम्नि देशुता भङ्क्त्वा शैवं अनुकामं रामणे विवाहिता श्रीराम बाहुबलेनात्र रमसामुद्रवयापने ख्यातं वेगमालुक्य हन्तुमे निर्गतपदे लक्ष्मणोऽपि यद्पुनः शुद्धरवं भातृमतौधुना तयोर्बालुबाला तत्र निर्वायं वयामि वै मदीयं जगदिदं सर्वं वृत्तान्तं वनवासके यत्र गद्याहरणं ते वै करिष्यति धाविधि यदि विश्वस्वरूपोऽसि तस्मात् तं पूजितो मया आश्रमविपिने घोरे कृतस्ते रक्षसं कुले तस्मात् तं परिवृक्षामि सत्यं ब्रूहि समागत कोचित् त्रिदण्डिरूपेण विपिने तं समागत ब्राह्मणवाच लङ्घोऽहं रालाक्षी श्रीमान् मन्दोदरी प्रति स्वकृते तु कृतं रूपं मयेथं शोभनाकृते आगतोऽहं वरारोहे भगिन्या प्रेरितो त्रवै जगानस्थानि हतो श्रुता भातरोखा दूषणौ अग्नि गुरुनिर्गमं नृपं त्वं मां त्वं त्यक्त्वा मानुषं पतिं मरितराज्यं गतश्रीकं निर्मलं वनवासिनं पट्टराज्ञी भव त्वं मे मन्दोदर्योपरि स्फुटं दासोऽस्मि तव तत्त्वङ्गी धन्वङ्गी भामिनी भवभामिनी त्यज्यतां लोकपालनं पतामि तव पादयो करं गृहाणं यद्यन्तं सनातं कुरु जानकी पिता ते याचित पूर्वं मया वै तत्कृते बले जनको मामुवाचेत्यं प्रणबन्धु मया कृत रुद्रचापभयानहं सम्प्रातस्तु स्वयंवरे मनोमे सहितं रावण निमग्नं विरहातुरं वनित्रसहितं श्रुत्वा पूर्वानुरागमोहित आगतोऽस्मि सिद्धात्माङ्गी सबलं कुरु मे स्वयम् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय बिच्चे 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 श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितायां तृतीयस्कन्धे रामचन्द्रवर्णनं नाम अष्टविंशोऽध्याय अथ एकोनत्रिंशोऽध्याय व्यासोवाच तथा गणे वधू दुष्टं जानकी भय विवला एवमानस्यं कृत्वा मनोवाचमुवाचः पौलस्य किम सद्वाक्यं तमाच्य सुन्दरमोहित नाहं वैश्वरिणी किन्तु जनकस्य कुलभया भवा कच्चलङ्कं दशस्य त्वं रामस्त्वं वै हनिष्यति मत्कृते मरणं तत्र भविष्यति न संशय इति तद्वर्णशालायां गता सर्पनिशनितो गच्छति वदति रावणं लोकरावणं श्रुतकृत्वा निजं रूपं जगामोटकमन्तिकं जग्राहतं बालं रुदतिं वयविवलं राम रामिति क्रन्दन्ति लक्ष्मणिति मुहुर्मुहुः गृहीत्वा निर्गत पापुरथमारभ्य सत्वर गच्छन् अरुणपुत्रेण मार्गे रुद्रजटायुष सङ्ग्रामो मुन्महारुद्रस्तय तत्र वनान्तरे अत्वा तं गृहीत्वा च गतो सुराक्षसाधिपो लङ्कायां कृतति तात कुररिमधुरात्मना अशोकवनिकायां संस्थापित राक्षसी युतस्त सौवितान्दैव चलित सामता अनादिविकृत रामपीतं मृगं हस्त्वा जगामादाय निवृत्त आयन्तं लक्ष्मणं दीक्षा किं कृतं तेन दासमम् एकाकिनीं स्वयं हित्वा किमर्थं त्वमेहागत श्रुत्वा शृणं तु पापस्य राघवस्त्वं भवेदिदं सौमित्रिस्त्वं भवेद्वाक्यं सीताबाणविदित प्रभुत्रां समायत्त कालयोगानुसंशय तदा सुपर्णशालायां गत्वा भिक्षाति दुःखितो जानक्यस्वे यत्नभूमौ कर्तुं समुदितो मार्गमाणौ तु सम्प्राप्तो यत्र सुपरिदखग जटायु प्राणस्य सद्दु पतित पृथिवीतले किनुक्तं रामणेनाद्यरिता सूचनकात्मजा मया निरुद्ध पापात्मा पापी पायितं विधेय पुनः इत्युक्त्वा एकत्वासोपगणः प्राणसंस्कृतो राघवेण वै युद्धर्दैकं राम लक्ष्मणो निर्गतो तदा कौन्दं घातयित्वा सुशापा च मोचव्यद्प्रभु वचनाथस्य हरिणा सख्यं च कृतरागर्भ अथ च बालिनं वीरं किष्किन्ध राज्यमुत्तमं सुग्रीवायतो राम कृतसङ्ख्याय चार्यत तत्र वार्षिकान् मांसं तथो लक्ष्मण संयुक्त किञ्चिन्तयन् जानकीं चित्ते दशनरितं व्यां
लक्ष्मण प्राप्रामस्तु सीता विरह पीडित सौमित्री कैकेयी सुता जात पूर्ण मनोरथा न प्राप्य शब्द जानकी नुनम नाहम जीवामितां विना नागमिष्याम्यं ध्याय मिति जनगणदिनीं कथं राज्यं वने वासुमितस्तातुरिता प्रिया पीडयन् मम दुष्टात्मा दैवभये गृहे किं करिष्यति दुर्गेयं भवितव्यमिहि प्राण्यां भारतानुजा यो क्या गतिस्तात भविष्यति सुखदुःखदा प्राप्य जन्ममनुर्वंशे राजपुत्र बुधो किल वनिति दुःखभोक्तारो जातो पूर्वकृतेन च त्यक्त्वा तमविभों गास्तु मया सह विनिर्गत दैवयोगा च सौमित्री मुक्ष दुःखं दुरत्ययम् मद्गोप्य मत्कुले पूर्वं मत्समो दुःखभङ्गर किञ्चन क्षमा क्लिष्टो न भूतो न भविष्यति किं करोम्यद्य सौमित्री मग्नो न दुःखसागरे न चास्ति तरणोपायो सहाय समे किल न वित्तं न बलं वीर त्वमेक सहचारक कोपं कस्मिन् करोम्यद्य भोगेऽस्मिन् शक्यते नुज गतं हस्तगतं राज्यं क्षणादिन्द्र समोपयं वने वासस्तु सम्प्राप्त को वेद विधिनिर्मितं बालबाबा च वैदेही चलिता च वयो स नैता दैवेन दुष्टेन श्यामा दुःखतरं दशां लङ्केशस्य गृहे श्यामा कथं दुःखे भविष्यति पतिव्रता सुशीला च मयि पृथियुता वृषं न च लक्ष्मण वैदेही सातस्य वशगा भवेत् स्वैरीणि वशपरारोहा कथं च जनकात्मजा त्यजेत् प्राणनियं तृतीय मैथिली भारतानुज न रावणस्य वशगा भवेदिति सुनिश्चितं मितातेन जानकी वीर प्राणस्तन्य संशयं मिता चेता सीता पाङ्गे किं वेदेन लक्ष्मण एवं विलपमानं तं रामं कमलोचनं लक्ष्मण धर्मात्मा शान्तयन् निर्दया मीरा धैर्यं कुरु महाबाहो त्यक्तकाधरतामिह आनयिष्यामि वैदेहीम् अत्वा तं राक्षसाधनम् आपदि सम्पदि तुल्य धैर्यात्मा वन्दिते धीरा अल्पधीयस्तु निमग्ना कस्तेव मन्यमेपि संयोगो विप्रयोगश्च दैवाधीन भविष्यकस्तु केदिशस्तत्र देहेनान्महे च क्वचित् राज्यात् यथा वने वासो वैदेह्या धरणं तथा काले समीचीने संयोग भविष्यति प्राप्तिं सुखदुःखानां भोगानिवर्धनं क्वचित् मान्यता जानकी जाने तस्मात् सुखं दयाधुना वानरा सन्ति भूयां गमिष्यन्ति ददशं सुधिं जनगणन्दिन्या न इष्यन्ते ते किल ज्ञातं भाग्यस्मिन् तत्र गत्वा कृता पराक्रमम् अथवा तं पापकर्माणो मानिष्यं मैथिलं तस्यैनं भरतं वापि समाहूय समानुजं हनिष्यं वयं शत्रुं किं स्वदेश पितार्गज रथो रघोडैकरथैरेव विजिता सर्वदिशा पुरा दन्दं सदा कथं सुखं कर्तुमहसि भागव एकोऽहं सकलं जेतुं सर्वतो विस्फुरं किं पुनः सहायो वैरावणं कुलपांसनं जनकं वा समानीय सहाये रघुनन्दन अनिशमि दुराचारं रावणं सुरकण्टकम् सुखन्यानन्तरं दुःखं दुःखयानन्तरं सुखं चक्रणे मेरि वैकं तन्न भवेद् रघुनन्दन मनुति गात्रं यस्य सुखदुःख समुद्भवे ससुखसागरे मग्न सुखी सत्कदाचन इन्द्रेण व्यसनं प्राप्तं पुरा वै रघुनन्दन नहुषसायुजो देवी सर्वे मघवत पदे सीतपङ्कजमध्ये च बहुवर्षगणान्यपि यज्ञतवासं मघवा वितस्तज्ञाजितं व्रतं पुनः प्राप्तं निजं स्थाने काले विपरिवर्तिते नहुषपत्यो भूमौ शापात जगराकृति इन्द्राणीं कामयानस्तु ब्राह्मणा न वनसि च भगस्तिको वाद सञ्जात सर्वदेहो महीपति तस्मात् गुण कर्तव्यो वसने सदि राघव उदेवी चित्तमास्ताय स्थातव्यं वै विवसिता सर्वज्ञो महाभाग सर्वतोषि जगत्पते किं प्राकृत्यर्थं कुरुषे शोकमात्मनि व्यासवाच इति लक्षणवाक्येन बोधितो रघुनन्दन तज्ञं सुखं तथा गतं बभुव विगतज्वर ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 ॐ देव्यै नमो नमः श्रीदेवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायां तेजस्कन्धे लक्ष्मणखित राम शोकसन्तो नामये नौकतिंशोऽध्याय अष्टादशोऽध्याय व्यासवच एतदेवं तौ संविदं कृत्वा यावत् तूष्णीबहु बद्धुः जगम तदा साकाशन् नारदो भगवान् निशि रणयन् महतीं स्वरग्राम विभूषितं कायमृतं साम तदा स्तमोपदस्थितं दिवान् दिष्टं च राम उत्थाय तदा बद्धविषं शुभम् आसमचार्यमान्यं च कृतवानमि दद्यते पूजं परमिकं कृत्वा किनञ्जलिरुपस्थित भविष्यसमीपे तु कृतज्ञमुनिहरि वैशं तदा रामं सानुजं दुःखमानसं प्रपुच्छ नारद प्रीत्या कुशलं मुनिसत्तमं
कथं रागवशोकार्थं यथा वैपाकितो नर हताशितं न जानामि रावणेन दुरात्मना सुरसन्ध्यगतसाहं सुतभञ्जनकात्मजं पौलस्तेन हरितं मोहन् मरणं समजानत तव जन्म च काकुत्स्थकोलस्य निधनाय वै मौथिलीहरणं जातम् एतदर्थं नराधिप पूर्वजन्मनि वैदेही मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वनिदिष्टा तपस्यन्ति सुजीविता प्रार्थिता रावणेन सौभय भार्यति राघव तिरस्कृतस्तया सर्वै जग्राह कवरं बलात् तत्सर्वदक्षिणं राम रावणं तापसी वेषं कुपिता गमिच्छन्ति देहं सम्पर्शदूषितं दुरात्मस्तवनाशाक्तं भविष्यामि धरातले अहिमिजापरा नारी तक्षादेहं पराजहापि संयमं सम्भूता गीत्वा रक्षसा विनाशातं कुलशैव सेव्यहलिन्द्रिव सम्प्रदाम् तव जन्म च काकुत्स्थस्य नाशाय चाम्बरे प्रतिदस्य हरि रंसा दजपं सेव्य जन्मन कुरुधैर्य महाबाहो तत्र सा वर्तते सरसा तै धर्मदा सिद्धार्थं दायन्ति देवानिशं क्यामधेनुपय पात्रे कृतमगवता स्वयं प्रातं प्रसिद्धं तस्या पीतं चैवमितमथा तथा दुसुरविदुग्धपारात्मा शीतदुःखविवर्जिता जाता कमलपत्राक्षी वर्तते विजिता उभयं कथया मेद्य तस्य नाशाय राघवव्रतं कुरुश्रद्धा वा भानिमयासि सम्प्रतं नवरात्रोपवासं च भगवत्या प्रपूजनं सर्वसिद्धिकरं राम जप होम विधानत मेधैश्च पशुभिर्दिव्याबलिं दत्त्वा विसंजितै दशां सम्भवनं कृत्वा सुशक्तस्तं भविष्यति कृष्णचरितं पूर्वं महादेवेन ब्रह्मणा तथा भगवता जीर्णं स्वर्गमध्यते स्थितेन वै सुखिनाम राम कर्तव्यं नवरात्रव्रतं शुभं विशेषेण कर्तव्यं पुंसा कष्टगतेन वै विश्वामित्रेण काकुत्स्थ्य कृतमेन्तन्न संशय गुरुगुणात् वसिष्ठेन कश्यपेन तथैव च गुरुणा हरितदारेण कृतमेतन् महाव्रतं तस्मात् त्वं कुरु राजेन्द्र रावणस्य वधाय च इन्द्रेण विनाशाय कृतं व्रतमनुत्तमं त्रिपुरस्य विनाशाय त्रिवेणाविकुलाकृतं हरिणा मधुना संयं कृतं मेरु महामते विधिवत् कुरुर्मया गुस्थं व्रतमेतदन्द्रित श्यामवच का देवी किं प्रभावासा कुतो जाता किमाहया प्रथम किं विधिवत् ब्रूहि सर्वज्ञस्य दयानिधे नरदेवच श्रीनाम सदा नित्य शक्तिराज्य सनातनी सरकमप्रदा देवी पूजिता दुःखनाशिनी कारणं सर्वजन्तूनां ब्रह्मादीनां सगुद्भव तस्यां शक्तिं विना कोऽपि स्पन्दितुं तुं नवशम्भो भवेत् विष्णुर्बाधन शक्ति सा कर्मशक्तिमे मृत्युर्मम प्रदर्शना शक्ति सा ध्वन्यशक्ति स्मरा विश्वा यस्य किञ्चिन् क्वचिन् वस्तु सदसद्भुवनत्रये तस्य सर्वस्य या शक्ति तदुत्पत्ति के कुतो भवेत् न ब्रह्मा न यदा विष्णु न रुद्र न विहकर न चन्द्रदेश्वरा सर्वे न धरा न धरा तदा सा प्रकृति पूर्णपुरुषेण परिणवै संयुक्ता विरहत्येव युगादुर्निर्गुणा शिवा सा पुत्र सगुणा पश्चात् करोति भुवनत्रयं पूर्वं संसिद्ध्यं ब्रह्मादीन् दत्त्वा शक्ति सर्वश तं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् सा विद्या परमा ज्ञेया वेदज्ञा वेदकारिणी असंख्यातानि नामानि तस्य ब्रह्मादिभिः किल गुणकर्मविधानैश्च कल्पितानि च किं ब्रूहि अज्ञानादिकारान्ते स्वरैर्वर्णेषु योजनैः तत्संख्यानि नामानि भवन्ति रघुनन्दन श्रीरामवच विधिं मे ब्रूहि प्रर्षि व्रतस्य मासत करु मे दैव सदां श्रीदेव्या पूजनं तथा नरदेवच पीठं कृत्वा समय स्थाने संस्थाप्य जगदम्बिकाम् उपवासा कुरु ग्रामविधानत आचार्य होम विष्यामि कर्मण्यस्मिन्मयि पति देवकार्यविधानार्थ मुझां प्रकरोम्यहं व्यासोवाच तच्चित्वा वचनं तस्य सत्यं मत्वा रामप्रतापवान् कारयित्वा स्वं पीठं स्थापयित्वाम्बिकां शिलां शिवं विधिवत् पूजनं तस्य चकार व्रतवान् हरिसम्प्राप्ते तस्मिन् मासि तस्मिन् गिरिवरे तदा उपवासपरो राम कृतवान् व्रतमुत्तमम् होमं च विधिवत् तत्र बलिदानं च पूजनं रात्रौ जागृतो प्रेम्णां व्रतं नारसम्मतम् अष्टमं भद्रात्रि तु देवी भगवती सा हिङ्गारूढा तत्र दर्शनं प्रतिपूजिता गिरिशृङ्गेश्वरवाच रागमं सानुजं गिरा मेघगम्भीरया चेदं भक्तिभावेन तुषितादिवच राम राम महाबाहो कृष्णाम्य ध्यन्वतेन प्रार्थये स परं व्यापं कामं यत्ते मनसि वर्तते नारायण सम्भुस्त्वं वंशे मानवे नगे रमणस्य यैव प्रार्थितस्तमरैरसि ब्रह्मचनयं कृत्वा हत्वा घोरन्तदाघ्नं त्वया विरक्षया वेदा स्वर्णमिदमिच्छता बुद्ध कच्छपरूपस्तु धृतवान् मन्दरं गिरिं अकुपारं प्रधानं कृत्वा दिवानपोषय कुलरों परं कृत्वा दशनागिरिं मेदिनीं धृतवासानि यद्रामहिरणाक्षं जगान च नरसिंहं कृत्वा हिरण्यकशिपं पुरा प्रहलादं राम रक्षित हतवान् श्रीराघव वामनं पपुरास्थाय पुरा छलितवान् बलिं भूतेन्द्र विषानुज कामं देवकार्यप्रसादक जमदग्निशुतस्तम्भे विष्णुरं सेनभङ्गत केन्द्रं सत्यगणं तु दानं भूमिर द्विजे दत्ते
तथिदानीं तु काकुत्थ जातु दशरथात्मज भाजितदुश्री सर्वे रावणेनाति पीडितै अवस्थि सायावै देवं सफलवत्तर स्वैसन्ति नरव्याध मक्षक्ति संविधायमि यशं सुपेन देयं रावणात्मज नशक नाशक भविष्यति न सन्देह कर्तव्यद्वय नग वसन्ति शिवनं कार्यं त्वया तत्रादिश्रद्धय हत्वा रावणं पापं कुरु राज्यं दान्तकम् एकादशसहस्राणि वर्षाणि पृथिवीतले कृत्वा राज्यं रघुश्रेष्ठ गत्वा सिद्धिविदं पुरा व्यासोवाच इति ददय देवी रामस्तु प्रीतमानस सम्यक् तद्मर्तं चक्रे प्रयाणं दशमी दिने विजयपूजनं कृत्वा दत्त्वा दानेन कपि पतिबलयुक्त सानुजसिपतिश्च प्रकट परमशक्त्या प्रेरित पूर्णकाम यदि तद्गसौ सौ सेतुबन्धं विधाय प्यनदम शत्रुं रावणं कीर्ति यशृणुति नरो भक्त्या देवाश्चरितमुत्तमं स विपुलान् भोगान् प्राप्नोति परमं पदम् सन्त्यन्नानि पुराणानि विस्तराणि बहूनि च श्रीमद्भागवतस्य न तुल्यानिति मे मति। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायां तृतीयस्कन्धे रामाय देवी वरदानं नाम विंशोऽध्याय तृतीय स्कन्ध समाप्त। हरि ओम। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्यन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। ओम अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं विवास्वान् मम न विप्राह मनुर्ज्ञागसेपवित् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नियमता योगे नष्ट परन्तप सैवं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तस्मि मे सकाचिति रहस्यं यतदुत्तरम्। अर्जुन वाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथं एतद् विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवासिनी। भगवान् वाच बहूनि मे भवति तानि वेतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नय व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवाम्यमायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिष्टानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं ये व्यतीत तत् त्यक्तदेहं पुनर्जन्म न इति मामिति अर्जुन। वीतरागभय क्रोध मन्मया मुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव वदाम्यहं मम सर्वमनुमोदन्ते मनुष्य पार्थ एव सर्वशः काङ्क्षन्तो कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता तीव्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा तद्वयं मया पृष्टं गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमभिमं विन्द्यकर्तारमव्ययं न मम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मम यो विजानाति कर्मविहीनं न प्रपद्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षभिः कुरु कर्मेव तस्माद्यं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोपेतं मोहिता तद्धि कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षते शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्षमण अकर्मणस्य बोद्धत्वं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्म य पश्चिद कर्मणि च कर्म य बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुर्मण्डितं यथा त्यक्त कर्म फला संगम नित्यसिद्धो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराश्रियते चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वपावदेकिलविषम् यदि स लाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो वैमत्सर समसिद्धा वसिद्धो च
पितपि च निबध्यते अर्गत संगस्य मुक्तिस्य ज्ञानावस्थितचित्तस्य सर्व समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा शुद्धम् उतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनं दैवमेव परे यज्ञं योगिनः परिपासते ब्रह्माज्ञावसरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्यसंयमाग्निषु शब्दादीन्विषमानन्य इन्द्रियाग्निषु सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुनति ज्ञानति पिता द्रव्ययज्ञस्तभो यज्ञयोगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञ यत यो संसितव्रता अपानि जुनति प्राणं प्राणिपानं तथा परि प्राणपानगति रुद्रा प्राणपायमपरायण परिनियताहार प्राणपाणि सूयति सर्वपिति यज्ञविदो यज्ञ च विदकल्मषा यज्ञश्रेष्ठमितभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्यज्ञस्य कुतोऽन्यकुरुषतमाम् एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्रह्मणो मुखे कर्म ज्ञान सर्वान् एवं ज्ञात विमुच्यते श्रियन्द्रम्यमयद्यज्ञानयज्ञस्वरन्तप सर्वं कर्माखिलं व्यर्थं ज्ञानेश्वरी समवेते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिस्प्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन यज्ञत्वा सुन्न पुनर्मोहमेवं वा शिविरन्दव येन भूत्वा न शेषेण दक्षयन्मन्यथो मयि अपि चेदसि चापेभ्यः सर्पेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यदि यथासि समग्ने भस्मकृतेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव दते तास्वदिं योगसंसिद्धकालेनात्मै विन्दति सदावास्लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परं शान्ति मचिरेणाधिगच्छति अनयश्रद्धनाशश्च संशयात्मा विनश्यति अयं लोकोऽस्तिनब्बरो न सुखं संशयात्मनः युगसन्त्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति अनन्तराय तस्माद् ज्ञानं सम्भूतं दृष्टं ज्ञानशनात्मनः इत्येवं संशयं योगमातिष्ठभरत ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे हरि ओम देव्ये नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय कृष्णाय वयं नमः ओम जय अम्बे गौरी जय जय
हरे अम्बे गौरी हरि ओम हरि ओम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं नाम स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनं ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अभिदुर्लभानि कल्पद्रुमाति द्रुमजानितानि पुष्पाञ्जलिर्नेस्तु सुखाय नित्यम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै जगदम्बायेति समर्पयेत्। हरि ओम। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरे। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासनं यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय माम किम् इष्टकामप्रसीदतु। ओम